Om Shanti. On va finir l'année ensemble. Et ensuite, il y aura une pratique. Donc, on commence. Le point du respect du soi, je suis une âme sans corps. Baba, comme moi l'âme, je me détache de ce corps, détachée de ce corps. Je suis libre de toutes les attractions et de tous les attachements au corps et je deviens complète et parfaite. Grâce à cette pratique, l'âme fait l'expérience que le corps et l'âme sont différents. Comment puis-je créer le niveau sans corps pendant que je suis dans ce corps? Quelle en est l'expérience? Et le signal, Bab Dada souhaite que chaque enfant reste sur le siège d'un niveau élevé constant, qu'il reste dans la solitude, l'introversion, qu'il soit sans corps, qu'il favorise l'unité, qu'il reste proche de l'unique, qu'il soit l'incarnation de l'économie et qu'il comprenne les idées de chacun et qu'il les respecte. Que les enfants se donnent des signaux entre eux et qu'ils révèlent le pouvoir de l'Assemblée afin d'accroître le niveau avyakt. Ayez un véritable intérêt pour l'introversion. Ce n'est qu'en ayant toutes les relations avec l'unique et en accueillant toutes les douceurs qui nous prodiguent qu'on peut rester dans l'introversion. Et le sujet d'aujourd'hui, je suis un être sans corps. Voici Moïni. Alors, je pense que la personne ne sait pas qu'on prend des notes. सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। Oh, je m'excuse. आपकी रूहानी यात्रा की मुबारक। Félicitations à chacun d'entre vous pour votre pèlerinage et de Baba, vous recevez les bénédictions du cœur. Baba a beaucoup partagé avec nous dans les Morlis. Si on utilise tout à bon escient qui vient du Murli, on deviendra un Rajayogi facile. Et un aspect important que Baba partage avec nous, c'est le Mansa Seva, c'est-à-dire la pratique à part l'esprit est importante. Donc, à partir de maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer que moi, je suis un être sans corps, une âme sans corps. Et nous avons tous cette connaissance que l'âme est différente du corps et qui sont détachés et séparés. Mais en ce moment, l'âme est dans le corps, donc c'est l'être humain. Et la relation la plus profonde de l'âme, c'est avec son propre corps. Donc, toutes les autres relations, ce sont des relations qui sont dans le corps. Mais la plus grande relation, c'est la relation avec notre propre corps. Donc, la notion de la connaissance ici est la suivante. Si on est un acteur, c'est un costume. Si on fait une tâche, on est un instrument. Si on est en pèlerinage, on est un voyageur. Donc, il y a différentes façons de nommer ce corps. Je ne dirais pas que le corps n'est pas là, parce que sans le corps, on ne peut absolument rien faire. Il y a une très grande importance liée au corps.
Et la relation au corps, हम c'est une सब relation aux creative हैं éléments. Et और peu जब भी importe nos हमारी pensées, किसी के प्रति कोई quand आलोचना होती है वो nous avons वाइब्रेशंस जाती हैं Nous प्रकृति avons des में pensées et si on a वातावरण des बन जाती critiques à है। l'égard de tout, ce आजकल जो sont विज्ञान पढ़ ces, बताया कि ce sont ces अगर vibrations हम qui rentrent dans la प्रकृति को nature. देते रहेंगे वातावरण को Donc, देते रहेंगे तो si on प्रकृति हमारे continue à लिए donner à la nature ce genre हमारी de कैसी pensée, qu'est-ce que la nature va faire सहयोगी pour nous? Comment la nature है जब हमें coopérera-t-elle फूल avec चाहिए nous? पानी चाहिए प्रकृति हमारी सहयोगी बने Alors, तो इसलिए si on a besoin de la nature, आत्मा को देह से न्यारा elle पाना है sera coopérative si उसके लिए अभ्यास l'âme करना doit être चाहिए donc en relation avec la जो मैं nature, आत्मा हूँ doit मेरा aller ये au-delà de शरीर ce है corps et cette pratique de je suis une मैं âme et ये que नहीं हूँ ceci est mon corps, कभी भी भूल से je ne मुझे नहीं suis pas पता ce मेरे पास corps. ज्ञान बहुत है मेरा Même शरीर par क्या है erreur, क्या je है ne peux pas क्या l'être, है mais la मेरी conscience du क्या है corps existe. उसके सारा Mon nom, ज्ञान quel est mon nom, इन्हीं quelle बातों est से la ही couleur de होता ma है peau, quelle est चाहे हम nationalité. स्कूल में Et ऐसी tout au long de la पढ़ाई journée, il y करें aura des कॉलेज में comportements qui यूनिवर्सिटी में seront हम्म, qui तो seront ऐसा liés à notre apparence स्थिति physique. का अभ्यास Alors, करें que ce soit pour aller chercher un हम passeport, que चेतन ce soit pour, धारणा के लिए peu importe, on बाबा sera कहते हैं dans la कि हम conscience du corps. एक रस Mais pour Baba से pense que युक्त भी pendant qu'on baratte, on doit समासन में बैठे voir que l'âme est जब हम différente एक du corps. स्थिति के आसन पर Et बैठते Baba हैं pense qu'on doit être assis sur un siège है de niveau élevé, एकाग्रता constant. तो ये जो ब्रिकुटी Et है comme le niveau est de rester तपस्या dans के लिए गुफा है ये l'introversion, कुटिया है ये तपस्या के लिए c'est un, कुटिया में c'est- बैठते हैं ना alors le point de जहाँ lumière, c'est शांति comme une और grotte एकता स्थापन ou une कभी भी hutte. कोई बात ऐसी नहीं करें जो फूट पड़े On ne doit jamais dire मतभेद हो जाए qu'il y a une सत्य ही séparation नाम entre nous ou des conflits d'intérêts और एकानामी ou का de साधन pensées. On doit favoriser l'unité एक दूसरे के विचार को et on समझना doit appartenir à l'unique, rester proche de l'unique आपस में et शांति devenir से l'incarnation de रहना l'économie. Et on doit comprendre और les कोई भी idées de बात chacun, मन में न les रखे respecter आपस में लेन देन et se करें donner des signaux तो entre समर्पण की nous. शक्ति बढ़ती है क्योंकि मन में बात रखते हैं ना तो भारी Et पड़ जाती है si on संवादिता échange entre दूर रह nous जाती है et qu'on dit à समीपता का l'autre ce qu'on अनुभव बढ़ता pense, है le pouvoir de क्योंकि l'Assemblée मुझे बहुत diminuera. अच्छा Donc, लगा on कि doit पूरे दिन में avoir. आपस में संगठन Miley करने dit के qu'elle a लिए beaucoup aimé cet राजस्व को aspect-là, प्रत्यक्ष करो d'abord d'échanger entre nous pour एक pouvoir ऊंचे révéler le स्थिति को pouvoir de बढ़ाने के l'Assemblée लिए entre ध्यान nous. में रुचि रखो Afin d'accroître le niveau दिन में aviaque, ध्यान के लिए घंटा नहीं ayez चाहिए जब un, é- un- कार्य पूरा हो गया या pour बात पूरी हो la गई solitude, on n'a pas besoin तब d'avoir une ou बैठो 2 heures. एकांत में Quand l'activité est terminée, aller dans एकांत जो है अपने la आत्मिक solitude, ça veut स्थिति में dire aller रियली आप dans le बैठोगे souvenir तो de l'unique. अपनी स्वयं की सच्ची Quand on पहचान va à खुद l'intérieur, दिखती है c'est-à-dire हर quand जगह c'est बहुत अच्छा l'introversion, लगता है quand on बैठता है आदमी se retrouve avec बहुत notre संतुष्ट होता है véritable कैसे करें हम identité, on se sent सर्वसमर्थ bien और et on se sent dans un सर्वोत्तम niveau stable कोई à भी रिश्ता Viax. प्रेम का है आनंद का है Donc, सुख avoir का toutes है les relations शांति avec से करें l'unique et en accueillant toute la और douceur उसके आधार पर de l'unique, एकांत प्रिय भी बन सकते on हैं prend तो अभ्यास भी करो les relations, toutes les douceurs de toutes les relations avec जब Baba. हम एकांत में गए Et ainsi, तो on शक्ति aura हमारी बढ़ती है les, on aura les खुद acquisitions भी महसूस होगा कि हम et notre बहुत गहराई में जाते concentration हैं फिर आते augmentera भी हैं बाहर parce que फिर अंदर जाते हैं on, तो on अभ्यास est. करते करते हमारा Alors, ये faire cette स्वभाव activité एकांत d'aller de स्वभाव l'intérieur बन vers जाता है l'extérieur et faire ce genre de pratique permettra d'augmenter notre véritable nature. Om Shanti. मैं Hmm. विदेही आत्मा हूँ मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूँ Voilà, je me détache de ce तेजोमयी corps. व सर्वाकर्षक Détaché de ce शक्तिशाली corps, je सर्वगुणों suis से libre de संपन्नदायी toutes les जागरूकता attractions et इस de tous les अभ्यास से attachements देह au और corps मनी का अलग अलग अनुभव करें et je deviens चेतन complète देह में et रहते विदेही parfaite स्थिति कैसी है grâce à cette इसके अनुभव pratique. क्या है
L'âme fait l'expérience que le corps et l'âme sont différents. La réflexion, comment puis-je créer le niveau sans corps pendant que je suis dans ce corps? Quelle en est l'expérience? Et le signal Avyakt, Baba souhaite que chaque enfant reste sur le siège d'un niveau élevé constant, qu'il reste dans la solitude, l'introversion, qu'il soit sans corps, qu'il favorise l'unité et qu'il reste proche de l'unique, qu'il soit l'incarnation d'économie, qu'il comprenne les idées de chacun et qu'il les respecte, que les enfants échangent entre eux et qu'ils révèlent le pouvoir de l'Assemblée. Afin d'accroître le niveau Avyakt, ayez un véritable intérêt pour l'introversion. Ce n'est qu'en ayant toutes les relations avec l'unique et en accueillant toutes ces douceurs, toutes les douceurs qui nous prodiguent, qu'on peut rester dans la solitude. Om Shanti.